हाय एवरीवन, वेलकम टू दक्ष एजुकेशनल ग्रुप। हम आज इस सेशन में बात करेंगे यूजीसी नेट लॉ पेपर कोड 5.58 टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। जैसे आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज राइट, अधिकार क्या होते हैं। A right is a legally protected interest which a person can claim and enforce them through law। एक अधिकार एक ऐसे इंटरेस्ट हैं जो हम लॉ के द्वारा क्लेम कर सकते हैं और इन्फोर्स कर सकते हैं और लागू करवा सकते हैं। It gives a person to power to demand certain conducts from others। यह एक पावर देता है किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कुछ चीज़ों की डिमांड करने के लिए। इनकी डेफिनेशन ज्यूरिस्ट ने क्या क्या दी है। जॉन ऑस्टिन ने कहा है, ए राइट एग्जिस्ट व्हेन ए लॉ इम्पोज्ड ए ड्यूटी ऑन अनदर। राइट तब पैदा होता है जब लॉ के द्वारा किसी के ऊपर ड्यूटी दिया जाता है करने के लिए। सॉलमन ने कहा है, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लाइक राइट एक अधिकार है जो रिकॉग्नाइज होता है या प्रोटेक्ट होता है लॉ के द्वारा। रुडोल्फ वॉन एहरिंग ने कहा है, राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित हैं, मतलब राइट हैं। राइट के लिए इसेंशियल पॉइंट क्या क्या होने चाहिए राइट के लिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पर्सन, एक्ट और फॉरबिडेंस एंड टाइटल। सब्जेक्ट मतलब किस बेस पे कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे जो राइट जो किसी दूसरे व्यक्ति का राइट बने। ऑब्जेक्ट विषय होना चाहिए। पर्सन जिसके ऊपर लागू किया जाना चाहिए। एक्ट और फॉरबिडेंस न कार्य न करने के लिए कहने की हिम्मत होनी चाहिए। टाइटल आधार होना चाहिए जिसके आधार पे किसी को राइट के लिए फोर्स किया जा सके। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ, कितने तरह के राइट हो सकते हैं। कई तरह के हो सकते हैं। लीगल एंड मॉरल राइट, विधिक और नैतिक अधिकार। पॉजिटिव नेगेटिव अधिकार, पॉजिटिव और नेगेटिव अधिकार। प्रोप्राइटरी और पर्सनल अधिकार, संपत्ति संबंधित। प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स, संपत्ति संबंधी और व्यक्तिगत संबंधी। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, राइट इन नेम और पर्सोनम हो सकते हैं। मीनिंग ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य का अर्थ। ए ड्यूटी इज लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ रिक्वायरिंग ए पर्सन टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग। ए ड्यूटी इज ए लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। ड्यूटी एक लीगल ऑब्लिगेशन है जो कि लॉ के द्वारा लागू किया जाता है। कर्तव्य बाद कानूनी बाध्यता है जिसके तहत व्यक्ति को कोई कार्य करना या ना करना होता है। ड्यूटी इज ए लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल मतलब ऑब्लिगेशन है जिसके द्वारा लॉ जिसको रिक्वायर करता है कि किसी कार्य को करना है या ना करना है। जैसे मेरी ड्यूटी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। अब मैं पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, इसमें कोई लीगली इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, लीगली इंटरेस्ट तब होगा अगर सरकारी कर्मचारी पढ़ा रहा हो और वो ना पढ़ाना चाहता हो, तो इसमें लीगल और लॉ दोनों इम्प्लीमेंट होते हैं। जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं, ड्यूटी इज ए कोरिलेटिव ऑफ राइट। जॉन ऑस्टिन के अनुसार ड्यूटी और राइट दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। सॉन, ड्यूटी इज ए ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अनदर्स राइट। ड्यूटी एक ऑब्लिगेशन है दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को रिस्पेक्ट करने के लिए। काइंड्स ऑफ ड्यूटी, लीगल एंड मॉरल ड्यूटी, विधिक और नैतिक कर्तव्य। पॉजिटिव ड्यूटी, नेगेटिव ड्यूटी, एब्सोल्यूट ड्यूटी और रिलेटिव ड्यूटी। एब्सोल्यूट ड्यूटी सभी के प्रति कर्तव्य, रिलेटिव ड्यूटी विशेष व्यक्ति के प्रति कर्तव्य। को रिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटी, दोनों एक दूसरे के संबंधित, दोनों एक की सिक्के के दो पहलू हैं। राइट्स एंड ड्यूटी आर इररिस्पेक्टिबल, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। एवरी राइट ऑफ वन पर्सन क्रिएट्स ए ड्यूटी ऑन अदर पर्सन। एक राइट व्यक्ति का एक व्यक्ति का राइट होता है और दूसरे व्यक्ति का ड्यूटी होता है। राइट टू लाइफ, जैसे उदाहरण के लिए राइट टू लाइफ, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट लाइफ। राइट टू प्रॉपर्टी, ड्यूटी टू नॉट टू इंटरफेयर। अगर प्रॉपर्टी का राइट एक व्यक्ति का है, दूसरे व्यक्ति का ये ड्यूटी है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस ना करे। द रिलेशनशिप वाज एनालिटिकली एक्सप्लेन्ड बाय वेस्ले न्यूकॉम होमफेल्ड। कंक्लूजन में हम अंत में ये कह सकते हैं, राइट एंड ड्यूटी टुगेदर फॉर्म ए बैकबोन ऑफ लीगल ऑर्डर एंड सोशल हार्मनी। राइट और ड्यूटी एक दूसरे का लीगल ऑर्डर और सोशल हार्मनी पैदा करते हैं। अधिकार और कर्तव्य मिलकर विधिक व्यवस्था और समाज तंत्र का आधार बनते हैं।
क्या बनाते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। राइट किसी और की ड्यूटी है, प्रिविलेज कोई राइट नहीं, पावर लाइबिलिटी है, इम्यूनिटी डिसेबिलिटी है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी मैचिंग द कॉलम में आ जाता है। राइट ड्यूटी, प्रिविलेज नो राइट, पावर लाइबिलिटी, इम्यूनिटी डिसेबिलिटी, इनको ऐसे भी याद रख सकता है। रीडू, पर्नू, पोली, IMD, MD। Important case laws. Stephens Donoghue वर्सेस स्टीफन 1932 का केस। Established duty of a care principle, manufacturer owners owes duty to consumer. Rare and feature case, strict liability duty to prevent escape of dangerous things. मेनका गांधी case is right and life to personal duty liability. Due process principle 1978 case. MC Mehta Union of India, absolute liability in India, environment duty of industries. MCQs. According to Solomon, right is a interest protected by law. Correlative duty is a duty. Correlative right is a duty. Holland, a correlative of power is liability. Strict liability rule involved in Rayland versus Fitcher. Absolute liability. Absolute liability case MC Mehta. Conceptual MCQs. Right and duties are considered complementary concept. Who said every right implies a duty? Lasky said every right implies a duty. Moral rights are based on moral rights based होते हैं B. Customs and morality. Legal rights are protected by state. Concept of natural right is associated with law. Type of rights, individual liberty. Types of civil rights mainly refers to individual liberty. Right to vote is a political right. Right to work is a economic right. Right to education is a social, economic and cultural right. Human rights are universal right. Theoretical question. Idealist theory of right is linked with Green. Legal theory of right is associated with Austin. Marxist theory views right as bourgeois concept B. Social welfare theory of right is linked with Bentham. Natural rights theory emerged strongly during Enlightenment. Fundamental duties are added by 42 Amendment. Fundamental duties are in Part 4A. Idea of fundamental duties are borrowed from USSR. Presently, numbers of fundamental duty is 11. Duty of parents to educate children was added by 86th Amendment. Right and duties relationship. Right to order. Duty to obey laws correspond to right to order. Right to freedom of speech implies duty not to defame. Fundamental protection is duty. Both the right and duty. Fundamental duties are non-justifiable. Right without duty leads to anarchy. Indian Constitution MCQ. Right to equality under 1218. Right to freedom is under 1922. Cultural and right 2930. Fundamental duties are 15A. Protection of environment is 51A. Philosophical MCQs. Gandhi emphasized
Duties first. Liberty theory stresses individual rights. Socialist view emphasize economic rights. Community-based view stress collective duty. Right to property was removed as fundamental right by 44th Amendment. Paying taxes is legal duty. Voting in India is B. Moral duty. Respecting national symbol is B. Fundamental duty. Promotion of harmony is fundamental duty. Safeguarding public property is fundamental duty. Higher order MCQs. Right become meaningful only with duty. Homeford is known for A. Legal rights analysis. Claim right in correlative with duty. Duty in correlates with claim right. Right to constitutional remedy is 32. Article 32. C. Human Rights Declaration was adopted in 1948. UDHR adopted by UNESCO. UNGA. Duty promotes social order. Balance of rights and duties leads to democracy. The ultimate purpose of rights and duty is social welfare. POIQ. Related to this unit, right and property. Rights are those conditions of the social life without which no man can seek to be himself. Who said this? Green. Right are those conditions of social welfare. Who said this? Lasky. No, Green. Marxist view of right consider them as bourgeois instrument. According to H.L.A. Hart, right primarily involves choice and control. Concept of claim right was developed by Hofeld. Natural rights theory was strongly advocated by Locke. Indian Constitution and duty PYQ. Fundamental duty incorporated in 42 Amendment. Fundamental duties are contained in 51A. Recommendation to include fundamental duties come from Swarn Singh Committee. Concept of fundamental duty is borrowed from USSR. Which article deals with the fundamental duty? 51A. Relationship and duty PIQ. The statement rights and duties are correlative is associated with Hufford. Which thinker emphasized duty over rights? Gandhi. Liberal political theory primarily stresses individual rights. Social theory of right emphasizes civil economic equality. Right without duty leads to anarchy. Human rights PYQ. Universal Declaration of Adoption by 1948 C. UDR was adopted by Union General Assembly. Human rights are considered with universal. First generation rights are mainly civil and political right. Second generation rights are mainly economic social right. Advanced POIQ conceptual analysis. Bentham described natural rights as social nonsense upon stilts. Which theory view the rights as socially recognized claims? C. Social recognition theory. Right to property cases cease to be fundamental right by 44 Amendment. Which duty promotes scientific temper? Between AH. Protection of environment is fundamental both. Hope for correlation, green and idealist rights, Marxist critique
critique fundamental duty 42 amendment Sovereign Committee UDR IR Gandhi duty action matching A both are true, B A both are true renowned expression, C fundamental duties are non-justifiable, they are not enforced by court, true. Fundamental duties are added by 42 amendment and Sovereign Committee, true. Constitution originally contained a fundamental duty, no. They are borrowed from USSR, ठीक. Parents' duty to educate children was added later, okay. It was inserted through 86th amendment, okay. Rights and duties are collective, true. Employment of rights requires performance of duty, okay. Gandhi emphasized duties rather than rights, okay. According to Gandhi, rights follows from the duties performed, okay. A option. Fundamental theory. Liberal theory gives primacy to duties, false. Liberal theory stresses individual freedom and rights. Socialist theory stresses economic right, okay. Socialist theory focuses on material equality, true. Human rights behavior. Human rights are universal. They apply to all human beings irrespective of nationality, true. UDHR is legally binding, no. Declaration of adopted by UNGA, United Nations General Assembly, true. A is false and B is true. First generation rights are civil and political rights, okay. They protect the protected individual liberty from state interference. Second generation right is welfare, okay. They include economic and social rights, okay. Good. A. Marxist criticism, liberal rights, they consider rights as a bourgeois instrument, okay. Marxist criticize liberal rights, true, both are true. Fundamental duties promote civic responsibility, okay. They aim to stress democratic culture, true. Fundamental duties impose legal penalty, no. Parliament may enact law to enforce duties, good. Th Green. Th Green. Th Green, moral development through rights. Karl Marx, nonsense, bourgeois right critiques, okay. Bentham, nonsense upon stilt, C. And D. Gandhi, duty before right, okay. Constitutional amendment and duties. 42 amendment. 42 amendment. Added fundamental duties. Good. 86 amendment. Added parent duty to educate children. Okay. Swansea committee. A का 2 fundamental duty. B का 1. Okay. Swansea committee. Recommendation inclusion. Duties inclusion. True. And 51A contains fundamental duty. Next, civil right. Civil right, a political right to vote, okay. B का एक, okay. And A का 2 freedom to of speech. Economic right to work, okay. Cultural right, language protection, okay. Very good. Household claim right, duty, and liberty, no right, and power, liability, immunity, disability, okay. First generation right, civil and political right. Second generation right, say economics and social right. Third generation right, solidarity right, UDHR right 1948. Next, 51A. 51A, protection of environment. 51A, respect constitution.
A. Respect Constitution. B. 51B का 1. Protect environment. Scientific temper. I. Safeguard public duty. Public property. Theories of right. Natural theory. Marxist theory. Class denomination D. And idealist theory Green. And natural theory Locke. Legal theory Austin. Right in the institution. Civil rights, economic right, welfare state, human right universally, political right, political participation, civil right, individual liberty. Good. This is all for the day and for this topic, and we'll continue from next topic in a next video. Thanks for watching this video and giving time. If you have any question, you can call me or use our website or our channel Daksh Education Group or Daksh iNet Education, and our website is, this is our website, you can watch it. Daksh Education akamai.net in, this is the website. And channel and you can also alternatively join our download the app Daksh Education Group. For free PDF of this class. This is all for the day. Thank you. I am going to end this class. I will continue with another session from tomorrow.